Hello students, today we have to start with the chapter number 2, Physical Features of India from Geography portion in Social Science. Students, earlier we had studied the India size and location in chapter 1. But in this chapter basically we have to study the physical features of India. Or we can say means these physical features basically we have divided into two categories, or we can say structure and physiography of India. So basically in this chapter we can divide the physical features in various categories. So physical features they are very important, means physical features हम उनको कह सकते हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, or we can say physiographic divisions are those divisions which are visible on the surface of the earth. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फिजिकल फीचर्स हैं ये किसी ना किसी रीजन की वजह से ये ओरिजिनेट हुए हैं, और वो रीजन्स कौन से हो सकते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर विल हैव टू डिस्कस अबाउट means various learning concepts. For example, means first of all we have to discuss about the introduction, or we can say the basic things related to these physical features, means we can say how these physical features have originated. So in introduction part we'll discuss those topics. Then we are having major physiographic divisions. तो देखो स्टूडेंट्स physiographic divisions, physiographic means जो हम देख पा रहे हैं, जो हम अर्थ सरफेस के ऊपर जिन फीचर्स को हम देख पा रहे हैं, that is basically we can call physiographic divisions. So basically we are having 6 physiographic divisions. The first one that we can say Himalayan mountains, then northern plains, then we can say we are having peninsular plateau, then we are having Indian desert, then coastal plains, and the last one that we have to discuss, that is the islands. So means all these physical features, or we can say physiographic divisions, we have to study in this chapter. Now students, in the introduction part basically we have to study that how the Himalayas, or we can say how the northern plains, or we can say coastal plains have originated, or we can say how the peninsular plateaus they have been originated, which we are seeing on the earth's surface, or how we can say that Arabian Sea and Bay of Bengal they came into existence with various islands. Now students, in physical features of India basically we have to study in this chapter the only physical features of India. But students, means formation of these landscapes they are basically on the basis of plate tectonics. So we can say the theory of plate tectonics, it is basically explains the upper part of the earth, or we can say the physical features are physiographic divisions of the earth. So basically we are having 7 major and some minor plates below the earth surface. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को समझने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे कि ये फिजिकल फीचर्स किस तरीके से आए. तो स्टूडेंट्स, आज जो हम कॉन्टिनेंट्स हम देख पा रहे हैं ये कॉन्टिनेंट्स पहले एक लैंड मास का पार्ट था. मतलब आज जो हम अलग अलग वर्ल्ड मैप के ऊपर जो आज अलग अलग पोर्शन हम लोग देखते हैं वो पहले एक लैंड मास था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से और थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आज ये पूरा लैंड मास सेपरेट हो गया. ठीक है, अब ये जो सेपरेट हुआ है स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से देखना है. देखिए, अर्लियर वी वर हैविंग द सेम लैंड मास, means only one land mass we were having, and India was the part of that land mass. So basically we were having two divisions. Two divisions means one, basically we were having Panthala, which was basically the ocean portion, or we can say which was basically the large water body. Today we are able to see the several part of oceans, or we can say several oceans, sea bodies we are having. But earlier we were having only the one part of ocean, that was basically called as Panthala, and the land mass we were having, that was Pangaea. So basically we can say Pangaea was the main form of all these continents, because all these continents they were basically the part of Pangaea earlier. But later on, means we can say that 10 million to 60 million years ago, means this Pangaea have separated into two parts. It has been separated into two parts. The upper part basically was called as Angara land, and the lower part is basically called as Gondwana land. So students, Angara and Gondwana, they basically the part of Pangaea, and basically we can say that basically we were having in Cambrian time period, or we can say in Cambrian age. So Cambrian age we can say that was the first geological time period
in geography. So India was basically earlier the part of Gondwana land, means in this shape. Basically we can say in this shape we were having the India earlier. So means India was basically the part of Gondwana land which was basically lies साउथ टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर के साउथ में था. लेकिन अब हम अगर ग्लोब पे देखते हैं तो इंडिया हमारा कहां पर है, इक्वेटर के ऊपर, मींस नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर. So India now it is lying in northern hemisphere, or exactly we can say in northeastern hemisphere. So basically it is the result of theory of plate tectonics. So we are having, means below the earth surface we are having several tectonic plates, means 7 major tectonic plates and some minor tectonic plates which have played very important role. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अर्थ सरफेस जो ऊपर फ्लोट कर रहा है, जो क्रस्ट पार्ट है अर्थ का, वो क्रस्ट पार्ट हमारा किसके ऊपर फ्लो कर रहा है, ये मोल्टन मैग्मा के ऊपर फ्लो कर रहा है. जो मैग्मा किसमें है, सेमी लिक्विड फॉर्म में. तो लिक्विड फॉर्म के अंदर जब कन्वेंशनल करंट्स आते हैं तो उसकी वजह से ये प्लेट्स क्या करती हैं, ये मूव करती हैं. या तो ये एक साइड में मूव करेंगी या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी या पैरेलल एक दूसरे के मूव करेंगे. तो ये जब प्लेट्स यहाँ पे मूव करती हैं स्टूडेंट्स, उसकी वजह से क्या होता है, ये कॉन्टिनेंट्स में धीरे धीरे ड्रिफ्ट होगा. मीन्स क्रिस्टाइल, क्रिस्टाइल मतलब वो धीरे धीरे ऊपर से उसके अंदर क्रैक्स जनरेट होने लगे और ये पैंजिया लैंड अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया. तो इंडिया कैसे इमर्ज हुआ, इंडिया का जो लैंड मास है वो किस तरीके से, जो आज हम इंडिया देखते हैं वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, हाउ दिस इंडिया वाज बेसिकली इवोल्यूटेड जस्ट बिकॉज ऑफ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. सो बेसिकली 7 मेजर प्लेट्स वी आर हैविंग, लाइक वी कैन से इंडियन प्लेट, we are having Eurasian plate, we are having South American plate, North American plate, Caspian plate, Australian plate. So several means plates we are having, tectonic plates we are having. So Indian plate, or we can say Indian, Australian and Eurasian plate, they have played very important role to bring up the country which we are having, or we can say the bring up the physical features which we are able to see in our country. So Indian plate, they have started moving from here towards Eurasian plate. So at that time Eurasian plate was basically the stationary. So Indian plate have started moving towards Eurasian plate. But between Eurasian plate and Indian plate we were having Tethys Sea. Tethys Sea we were having at that time. So means when we can say these plates have started moving towards each other, that is basically we can call convergent boundary, or we can say means convergent boundary or convergent movement of plates. So convergent movement of plates, basically we can say that when two plates move towards each other, जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं तो बीच में टेथिस सी था. तो टेथिस सी का जो वाटर था वो एक साइड से दूसरी साइड में जाने लगा, लेकिन उसमें जो सेडिमेंट्स थे वहां पर, वो सेडिमेंट्स धीरे धीरे क्या हुआ कि फोल्ड्स की वजह से इन प्लेट्स जब ये कोलाइड हुई तो ऐसे फोल्ड जनरेट हुआ. उस फोल्ड की वजह से ये पार्ट ऊपर उठता गया, और जब ऊपर उठता गया ये पार्ट तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, हिमालयाज में. सो आज हम इंडिया के अंदर जो हिमालयाज देख रहे हैं वो कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से ये हिमालयाज हम कह रहे हैं. और वो किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन प्लेट्स एंड यूरेशियन प्लेट्स. और जब ये हिमालयाज यहाँ पे जब जनरेट होंगे तो आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा एंटीक्लाइन एंड साइक्लाइन. साइक्लाइन और एंटीक्लाइन मींस जो अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट हमारा जो होता है, मींस दिस अपर पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड एंटीक्लाइन एंड दिस लोअर पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड साइक्लाइन. तो जब ये प्लेट्स में फोल्ड जनरेट हुआ, अपर पार्ट हुआ, मींस ये हिमालयाज हमारे को मिले यहाँ पे जो एंटीक्लाइन जिसको हम बोलते हैं. और जब ये यहाँ से कुछ ना कुछ इस तरीके से ऊपर उठा, जब प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ऐसे ऊपर उठा तो यहाँ पे जो गड्ढे बन जाते हैं वो यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं, जो किसका रिजल्ट है, साइक्लाइन का. और आज वो गड्ढे किसी ना किसी रीजन की वजह से वो फिल हो चुके हैं, या तो सेडिमेंट्स की वजह से, या फिर सिल्ट मटेरियल की वजह से, या फिर रिवर्स की इरोजनल एक्टिविटी की वजह से. तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गए, ये प्लेन्स में कन्वर्ट हो गए. So students, we are having means several geological divisions. Means in India we are having 3 geological divisions. The first geological division that we can say Himalayas, or we can say peninsular mountains. So they are basically the result of convergent movement of the plates or convergent movement of Indian plate and Eurasian plate. एंड जहां पर जो गड्ढा जनरेट हुआ वो गड्ढा भी किसका रिजल्ट है, उन्हीं कन्वर्जेंट प्लेट्स का रिजल्ट है. लेकिन अब वो किससे फिल हो गया, या तो सिल्ट मटेरियल से या सेडिमेंट से डिपॉजिट हो गया, और जिसको हम क्या बोल देते हैं,
plain areas. So Indo-Ganga Brahmaputra plains, that is the second geological division which we are having, and the third geological division which we can say that we are having, that is peninsular block. तो हम इसीलिए बोलते हैं young mountains, Himalayas को हम इसीलिए हम young mountains बोलते हैं, means how the Himalayas have originated, how the plain areas have originated. Now see, the next portion that is basically we are having, that is the third geological division which we are having, that is peninsular block. So as I told you that India was basically the part of Gondwana land, which is the one of the oldest landmass of the world. So peninsular block is also one of the oldest landmass of the world, because the northern India that have been basically originated just because of the Indian plate and Eurasian plate. So that's why only we used to call the mountains Himalayas as young mountains, because they have originated recently after Gondwana land, basically we can say. So that's why we used to call peninsular block is the oldest block. Now students, we were discussing about the movement of tectonic plates, means convergent boundary, basically we can say that movement of plates towards each other. जब एक दूसरे की तरफ मूवमेंट होती है प्लेट की, उसको हम कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं, और जब एक जगह से एक से दूसरे की तरफ, मींस व्हेन दीज प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज बेसिकली वी यूज्ड टू कॉल डाइवर्जेंट बाउंड्री. And one we can say that when two plates when encounter to each other, when they move towards then opposite directions, they never collide to each other, but they move towards opposite direction, or we can say that never disintegrate with each other. So that is basically we can call transform boundary. So this is how these geological divisions have came up on the surface of the earth. Next we can say that the earth basically it have been evoluted approximately 460 million years ago, or we can say 46 crore years ago. So means these plates they have altered the size and we can say the positions of the continents. In plates ने क्या किया कि continents की size और जो इनकी पोजीशन है वो डिफरेंट वे में चला गया. तो पहले मैक्सिमम लैंड पार्ट हमारा गोंडवाना लैंड का सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर था, लेकिन अब मैक्सिमम लैंड पार्ट हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है. सो इट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. ये मूव करती हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं और इनके एक दूसरे के अंदर गैप आता है. एंड द फिजिकल फीचर्स दे आर द रिजल्ट ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. बिकॉज मीन्स एंडोजेनिक फोर्सेस हम कह सकते हैं जो अंदर का जो फोर्सेस है, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक की वजह से जो ऊपर आता है लावा, वो कहीं ना किसी फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है. तो पेनिसुलर ब्लॉक के अंदर भी क्या है, बेसिकली पेनिसुलर ब्लॉक वी कैन से दैट इट इज द डेक्कन ट्रैप, और वी कैन से बेसिकली इन दिस रीजन वी आर हैविंग द मोर अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैक सॉइल. सो ये कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इसलिए हम इसको ओल्डेस्ट लैंड मास बोलते हैं. Then we are having means several continents which we are having, they are just the result of we can say lateral movement of the plates, and means present geological structure which we are having, or geomorphological process which is active in the Indian subcontinent, it is basically came into existence just because of we can say endogenic and exogenic, or we can say lateral movement of plates. Now the next portion we are having, that is the physical features of India and their characteristics, right? So physical features or their features, right? Physical features and their characteristics, or you can call features of those physical features. So as I told you earlier that three geological divisions we were having, basically that those three geological divisions, they were basically the result of plate tectonics, or we can say the continental drift theory of Gondwana land, right? Now physical features means physiographic divisions, or we can call physical features. Physiographic division हम students उसको बोलते हैं जो हम बाहर देख पा रहे हैं आज, right? तो वो जो हम बाहर देख पा रहे हैं उसमें सबसे पहला है हमारा हिमालयन माउंटेन्स. The Himalayan mountains, basically we can say that these Himalayas, they are basically having stretched over India's northern boundary. So it is making the northernmost boundary of India, and these mountains run from west to east, right? Or we can say from the river Indus to Brahmaputra. And basically students, we can say that these Himalayas, they are young fold mountains, or we can say they are the loftiest and one of the rugged mountain barriers of the world. Now see students, I have said these are young fold mountains.
these are young fold mountains. Young fold mountains means, as I told you, that this is basically the result of convergent boundaries. जब ये दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करके आ रही हैं तो उसकी वजह से ये हिमालयाज क्या हो रहे हैं, ये ऊपर उठ रहे हैं और उसका ये रिजल्ट है. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल देम यंग फोल्ड माउंटेन्स. और इनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है. लॉफ्टिएस्ट माउंटेन हम इनको क्यों बोलते हैं? लॉफ्टिएस्ट माउंटेन हम इनको इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लॉफ्टिएस्ट माउंटेन्स हम इसलिए बोलते हैं कि इस हिमालयन रीजन के अंदर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स भी अवेलेबल हैं. तो वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेटली 50 हाईएस्ट पीक्स हमारे हिमालयाज के अंदर अवेलेबल है. So students, means Himalayas, as we can say that, means in upper part basically we can say, means in this manner we can say that means in northern part we are having basically Himalayas. So Himalayas means they are basically, we can say that, means running from here, means they in this manner they are moving towards the eastern side, right? So from we can easily say that from west to east, these Himalayas are basically having their direction, and from west to east the length of these Himalayas, that we can say that is 2400 kilometers, right? From west to east they are basically, we can say 2400 kilometers, and they vary in width. means width, यहाँ पर Himalayas की width अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से है. तो हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं, ये वेस्टर्न हिमालयाज की विड्थ हमारी अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स के आसपास है. और जैसे जैसे हम ईस्ट साइड में मूव करते हैं, इनकी विड्थ यहाँ पर 150 किलोमीटर के आसपास हो जाती है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हिमालयाज की जो लेंथ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिक्रीज होती जाती है. So we can say that width vary from Kashmir to Arunachal Pradesh, right? The next we can say, students, in this part basically we can say that in terms of longitudinal extent, these Himalayas, they are basically divided in 3 regions, or we can say in 3 parallel ranges. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये हिमालयाज की width डिक्रीज होती है ईस्ट साइड में, वेस्ट से ईस्ट साइड में डिक्रीज होती है, और वेस्ट से ईस्ट तक इसका जो पूरा कंप्लीट लेंथ है वो 2400 किलोमीटर्स है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम कहेंगे, आप अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, longitudinal extent of Himalayas. As I said that we have divided in 3 divisions अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स. बट अभी मैंने जिस तरीके से ये ड्रॉ किए थे लास्ट स्लाइड में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कहोगे कि ये तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है हिमालयाज का, बट हाउ वी कैन डिवाइड दिस हिमालयाज इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट? सो स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली दे आर वर्टिकल, मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव डिवाइडेड दिस हिमालयाज. So according to longitude we have divided these Himalayas into 3 categories. Basically means latitude in the sense when we move from south towards North India. So according to that means we have basically 3 divisions. So first, second and third means 3 divisions we are having. The uppermost part of these Himalayas, that is basically we used to call greater, or we can say Great Himalayas. So the first one, that is the Great Himalayas. The second one, that Great Himalayas, they are also called Himadri. We can also call Kashmir or Himachal Himalayas, right? So Great Himalayas, they are basically also called Inner Himalayas. Now why we are calling Inner Himalayas? जैसे घर के अंदर का जो गेट होता है, तो अंदर in the sense it is making the boundary. So from here we are moving towards north part. तो जो अंदर का पार्ट है वो इनर हिमालय है. और इनर हिमालयाज बेसिकली ये जब प्लेट्स की मूवमेंट हुई तो इनर हिमालयाज पहले बने एज कंपेयर टू आउटर हिमालयाज. सो ग्रेट हिमालयाज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री, दे आर ऑल्सो कॉल्ड आउटर हिमालयाज. एंड द एवरेज एलिवेशन ऑफ दीज ग्रेट हिमालयाज इज 6000 मीटर्स. मतलब इन हिमालयाज की, ग्रेट हिमालयाज की जो हाइट है वो एवरेज हाइट हमारी 6000 मीटर से, हम कह सकते हैं कि इनकी मेन सी लेवल से हाइट 6 किलोमीटर ऊपर तक है. जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक्स हैं वो इस ग्रेट हिमालयाज के अंदर आती हैं, या तो यहाँ आती हैं या फिर हमारे दूसरे रीजन के अंदर आती हैं. तो ग्रेट हिमालयाज के अंदर बेसिकली वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक्स आती हैं.
So great Himalayas, they are made up of granite and asymmetrical in nature. Means granite and asymmetrical in nature. Why we are calling it asymmetrical? Because यहाँ पर ये जैसे जैसे ये हम आउटर हिमालयाज की तरफ आते हैं, जैसे जैसे हम इनर हिमालयाज से जैसे हम ग्रेटर हिमालयाज से इनर हिमालयाज की तरफ आते हैं, तो इनकी हाइट डिक्रीज होती जाती है. तो इनकी हाइट डिक्रीज होती जाएगी. तो ये एसिमेट्रिकल मींस ये यहाँ पे ग्रेनाइट से बने. ग्रेनाइट सबसे हार्ड पत्थर होता है हमारा. तो ग्रेनाइट से ये बने मींस कुछ अंदर वाला पार्ट इनका ग्रेनाइट से, बट अपर वाला पार्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्लेशियर्स या फिर स्नो कवर्ड है कंप्लीटली. तो एसिमेट्रिकल मींस यहाँ पे टेबल लैंड टाइप में जनरेट होते हैं. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट एसिमेट्रिकल, राइट. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेट Himalayas. Now second division which we are having, that second division of Himalayas we are having, that is we can say lesser Himalayas, or we can say Himachal Himalayas, or we can also call it middle Himalayas. So we can say they are basically lies mainly between the Shivaliks, or we can say outer Himalayas, or we can say between inner Himalayas. So lesser Himalaya we can call it, Himachal we can call it, and locally it is known as धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश. इसको लोकली हम हिमाचल प्रदेश में धौलाधर बोलते हैं, और इसको उत्तराखंड में हम नागटीवा बोलते हैं. सो मीन्स हियर वी कैन से the middle Himalayas, they are basically the middle part between Shivaliks, or we can say between outer Himalayas or inner Himalayas. So means that was basically the second division. So we can say, if we talk about the altitude of middle Himalayas, or we can say lesser Himalayas, or we can say Himachal or Uttarakhand Himalayas. So basically we can say the altitude or elevation means greater Himalayas, they were having elevation that was basically we can say 6,000 meters, but the altitude means height of lesser Himalayas, or we can say middle Himalayas, that is basically ranges between 3,700 to 4,500 meters, but the width is about 50 kilometers. But the width of greater Himalayas is too high as compared to lesser Himalayas, or we can say as compared to middle Himalayas. So the average width of these lesser Himalayas is 50 kilometers, but the altitude is 37 to 4,500 meters. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इनका ऑल्टीट्यूड ग्रेट हिमालय से कम है, और इनकी जो विड्थ है वो भी ग्रेट हिमालय से कम है. सो इट इंक्लूड्स बेसिकली सेवरल रेंजेस like Pir Panjal range. It is the longest and we can say the highest range of lesser, or we can say middle Himalayas. Dhauladhar, Mahabharat, means we can say that these are important ranges which basically lies in lesser Himalayas. And Pir Panjal range forms the longest and most important range. Range का मतलब है कि ये किसी ना किसी सीरीज में चल रहे हैं. तो ये सीरीज में जब चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पीर पंजाल सबसे ज्यादा सीरीज में चलता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे बड़ी सीरीज बनाता है. सीरीज मतलब ये कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे सीरीज जनरेट करेगी, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे सीरीज जनरेट करेंगे. तो हम कह सकते हैं पीर पंजाल रेंजेस दे फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द इंपॉर्टेंट रेंजेस in lesser Himalayas. Now the third portion which we are having, or the third part, or the third longitudinal extent of Himalayas which we are having, that is Shivaliks. And Shivaliks, they are basically also called outermost range of Himalayas. And these Shivaliks basically we are having the average elevation that they are having, that is basically we can say 900 to 1100 meters. तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एलिवेशन ग्रेट हिमालयाज की 6000 मीटर्स, और फिर उसके बाद लेसर हिमालय या फिर हम कह सकते हैं मिडल हिमालय जिसकी एलिवेशन थी 3700 टू 4500, और थर्ड जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है वो है हमारी शिवालिक्स, जो कितनी है 900 से 1100 मीटर्स तक है. और अगर यहाँ पे हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ देखो आपकी ग्रेटर हिमालय से और इनर हिमालय से जब हम आउटर हिमालय की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये विड्थ डिक्रीज होती जा रही है. एंड शिवालिक्स बेसिकली वी कैन से दैट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ इरोडेड मटेरियल, और वी कैन से द रिजल्ट ऑफ बोल्डर्स एंड ऑल. सो इट इज बेसिकली द लो लाइंग एरिया of Himalayas. So the width of Shivaliks is basically ranging from 10 to 50 kilometers. Now see, in Shivaliks we are having availability of
dunes. So dunes basically we can say we can define that they are basically the longitudinal valleys which mainly lies between Shivaliks and lesser Himalayas. And some of the important dunes we are having in Shivaliks, that we can say Dehradun, Kotli Dun, Dehradun, Kotli Dun, or we can say Patli Dun. They are the important, we can say, dunes in India which are basically available in Shivalik regions. dunes देखो, जब ये basically lesser Himalayas और शिवालिक के बीच में अवेलेबल है, मतलब ये longitudinal valleys हैं. longitudinal valleys आप कैसे बोलोगे, इस तरीके से अवेलेबल हैं ये. तो lesser हिमालय और बीच में साइड में आपका शिवालिक्स, और इनके बीच में जो एरिया है वो आपके कौन से हैं, ड्यून्स हैं. So these dunes, they are also very important. So important dunes in India which we are having, they are Dehradun, Kotli Dun and Patli Dun. Right. So this was basically the longitudinal extent of Himalayas. Now we have divided Himalayas, means we have divided Himalayas according to, we can say, the river regions, or we can say from west to east. But before starting this division from west to east, again we can check it in the map. Means these Himalayas, as we discussed here, we can say that greater Himalayas we are having in the upper portion, right? Here we are having great Himalayas. Then see, it is the region of Shivaliks, and between Shivaliks and greater Himalayas, means this is basically we can call great Himalayas, this is Shivalik. If it is not visible, we can check it from here, and here we are having lesser Himalayas. So great Himalayas, Himadris, or we can say inner Himalayas, lesser Himalayas, middle Himalayas, or we can say Himachal Himalayas, or we can say Shivaliks और आउटर मोस्ट हिमालयास. अब आप यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि ग्रेट हिमालयास के अंदर आप देखिए माउंट कैलाश इधर है आपका, इधर आप देखोगे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स में से आती हैं. या फिर अगर आप बात करो यहाँ पे, तो यहाँ K2 बेसिकली ये काराकोरम रेंज में चला जाता है. सो ग्रेट हिमालयास, इट बेसिकली वी आर हैविंग द वर्ल्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स वी आर हैविंग इन द रीजन ऑफ ग्रेट हिमालयास. और उसके बाद में हमारा इनर हिमालय है जिसमें आपका पीर पंजाल और ये सब धौलाधर रेंजेस, ये सारी आपकी लेसर हिमालयास के अंदर आ जाती है, और नीचे आपका आ जाता है शिवालिक्स. राइट. सो ये हमारा कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है. इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है. अब हम हिमालयाज की जो डिवीजन करेंगे, वो डिवीजन हम करेंगे हिमालयाज की वेस्ट से ईस्ट की तरफ. वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हम डिवीजन करते हैं हिमालयाज की, सो बेसिकली वी कैन से दैट हिमालयन रीजन्स, दीज हिमालयन रीजन्स बेसिकली लाइज फ्रॉम इंडस टू सतलुज. देखिए आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर दिस इज बेसिकली वी कैन से दैट वी आर हैविंग इंडस रिवर हियर, राइट. इंडस रिवर वी आर हैविंग. सो फ्रॉम Indus to Brahmaputra here, means in this part we are having Brahmaputra. So from Indus to Brahmaputra we have divided these Himalayas in several divisions. Like from Indus to Satluj we are having Punjab Himalayas. From Indus to we can say Kali, we are having we can say that Central Himalayas. Then we are having, means after Kali to means Tista, we have divided the various divisions. So according to that, means we can say from west to east we have divided the Himalayas, right. So Punjab Himalayas, but it is also known as Kashmir and Himachal Himalayas from west to east. Then we can say that we are having Kumaon Himalayas between Satluj to Kali river. Right. So we can say that means Kashmir or Himachal Himalayas, they are basically between, we can say, Indus to Satluj. Then Kumaon Himalayas we are having from Satluj to Kali river. Then we are having Nepal Himalayas. Nepal Himalayas, they are basically from Kali to Tista. Then we are having Assam Himalayas. So these are the four main divisions from west to east. But one more division we are having, which we used to call Purvanchal, which we also used to call northeastern Himalayas. So these are basically 5 major divisions of Himalayas on the basis of, or we can say, regions from west to east, right. So Himalayas, we can say that they curve sharply to the south beyond the Dihang Gorge, means when Brahmaputra river enters from there, we can say they are sharply beyond the Dihang Gorge and spread along India's eastern border, which is basically we used to call Purvanchal in, or we can say eastern hills and mountains. Purvanchal basically we can say it is basically we can call like from north to south, whatever divisions we are having, means
this type of hilly region we are having. So Purvanchal, basically we can say it from Dihang region towards eastern side we are having Purvanchal. So here we are having Patkai hills. Patkai hills we are having. Then we can say in Nagaland, Naga hills we are having, because the extension of means we can say Purvanchal is from north to south. So directly we can say that from north to south means in this direction we can say we are having Purvanchals, or we can say eastern hills, or we can say mountains or eastern mountains. So Patkai hills, Naga hills, Manipur hills we are having. Right, Manipur will see, then at the end we are having Mizoram, so Mizo hills we are having. So these hilly regions, they are basically the part of Purvanchal. Right, so from west to east means we can say we have divided these Himalayas in several regions, like we can say in the first region which has been divided as Punjab Himalayas, or we can call Kashmir and Himachal Himalayas. So that is basically divided from Indus to Satluj. Then Satluj to Kali we have divided Kumaon region, or we can say Kumaon Himalayas. Then Kali to Tista we have divided that, basically we can also call that Darjeeling Himalayas, or we can also call that Nepal Himalayas. Then Tista to Rihang we are basically having Assam Himalayas, or we can say Arunachal Himalayas, right. So these are basically subdivisions of Himalayas from west to east. I hope students now you have understand about the Himalayas, right. The subdivisions of Himalayas means basic 5 major subdivisions of Himalayas we are having. The first that we can say Kashmir, northwestern Himalayas, that basically lies between we can say from Indus to Satluj river. Then we are having Himachal, or we can say Uttarakhand Himalayas, that basically lies from Satluj to Kali river. Then we are having Darjeeling or Sikkim Himalayas, which we can also called Nepal Himalayas, that basically we can say from Kali to Tista river. Then we are having Arunachal Himalayas. The Arunachal Himalayas basically we are having from Tista to Dihang river. Then we can say at the end we are having eastern hills and mountains, and eastern hills and mountains, they are basically having means extension from north to south. So north to south means in northern part we are having Patkai hills. Then below Patkai hills we are having basically we can say Naga hills, then Manipur hills, then Mizo hills. So we can say that these 4 major hilly regions of northeastern part means easternmost part of India, they are basically the part of eastern hills and mountains, which are basically we can call Purvanchal. So Himalayas, they have been divided in various regions, means according to longitude we have 3 divisions: Great Himalayas, or you can call inner Himalayas, or we can also call them Himadri. Then we are having means lesser Himalayas or middle Himalayas we can call. Then we are having Sivaliks, that is basically longitudinal extent of Himalayas. Then we can say west to east divisions, which I told you earlier. So this was all about the Himalayas. Now the next physical feature of India that we are having, that is, to watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.